Okay, so we are doing today Thermodynamics JEE PYQ 2023 April shift we will do. Later बाद में we can do the January shift और 2024 25 सारे questions धीरे धीरे करेंगे. So let's start from the question number 1. So they said find the log K value for A and B reaction. Del H is given and S is also given, and that is 2.303, 8.314, 298. Okay, that product is also given. So we have to recall that formula where the H and K is connected. So we know that del G would be is equal to minus RT ln of K, and we could write minus 2.303 RT log of K. But here del G तो given ही नहीं है. So del G we will write as a delta H minus T delta S by using the thermodynamics. Since all are standard condition, minus 2.303 RT log K. Okay, del H value is given minus 54.07, but check the unit, kilojoule is given, so just 10 to power 3 minus. Temperature is how much? That is 298 is given, and S value is given 10 joule. Unit you have to check it, it should be same. And ये पूरा value दिया हुआ है 5705. Okay, so it's become 5705. This is the entire value is given, and log K value. So when you do the mathematical calculation, you will get the log K value would be is equal to 10, and that's the answer. First one. So let's move to the next question. In next question, they are saying consider the following data. Okay, heat of combustion is given, heat of combustion of carbon is given, heat of combustion of alcohol is given, and heat of formation of alcohol is also okay, that we have to calculate. ठीक है भाई. So first we have to write the balance equation. C2H5OH combustion given है तो पहले इसका burning लिख लेते हैं. That should be CO2 plus H2O. Let's do the balancing. So carbon twice, so that should be twice. Hydrogen is 6, so this should be 6. And oxygen we are getting, so that how many oxygen we have? 2 to the 4 plus 3, 7. So that we can write 7 by 2. Simply apply delta H. Formation would be is equal to HP minus HR. So we have a product 2 into CO2 plus 3 into water energy minus that is alcohol energy, that is C2H5OH, and oxygen की हमें पता है that should be 0. Oxygen would be 0. Just put the value. So 2 into CO2 value is how much? That is okay, carbon of combustion is given, so that should be a similar value, that is a 393.5 plus 3 into minus 241.8, and that minus that is the formation of alcohol we needed, C2H5OH, and oxygen would be 0. Okay, and that enthalpy of reaction combustion is given 1 no, that is actually 1234.7, that is some misprint happened. It should be 1234.7 with the minus sign. That's it. Now just do the calculation. You will get the H of alcohol formation, that would be is equal to minus 278 kilojoules per mole. You will get it because every unit was in kilojoules, so your answer also will be in kilojoules, right? So simple formula, just HP minus HR. Okay, let's move to the next question. They said when a 60-watt electric heater is immersed in a gas for 100 seconds at a constant volume container with adiabatic walls. Okay, adiabatic means Q should be equal to 0, and constant volume is given, volume is constant.
The temperature of the gas rise from by 5 degrees Celsius means delta T is given 5 degrees Celsius. The heat capacity of the gas joules per Kelvin that we have to calculate. So we know that Q is equal to NC delta T, that formula we know that. So watt means what? 60 watt. 60 watt means that is the 60 joules per second पावर की यूनिट होती है, राइट? तो हीट कितनी हो जाएगी? पावर इज इक्वल टू W बाय T, और W को हम वी कैन राइट द Q heat, so W is equal to, that is the 60 into 100 second is given, right? So that we got it, Q we got it 60 into 100 would be is equal to, okay, we are assuming since mass is not given, so we are assuming that is the only for 1 mole. So that is the molar heat capacity is written. If heat capacity is there, then there is no term for this moles, so we can remove it off. C निकालना है, डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया? 5 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केल्विन का डिफरेंस और डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस एक ही होता है. तो सी आ गया हमारे पास 60 into 100 by 5. So on calculation you will get it 1200 joules per Kelvin. That is the answer, right? So let's move to the next question. Here they have given ethene plus 3O2 will give you CO2 plus H2O. The amount of heat produced as measured in bomb calorimeter is 1406. So this is QV is given, right? The minimum value of T delta S needed to reach equilibrium in this. Okay. What do you think? कैसे करना होगा? तो मैं QV का वैल्यू मतलब डेल U का वैल्यू तो गिवन ही है पहले से ही. एंड टेम्परेचर कितना दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस निकालना है. मतलब हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं. एक तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और दूसरा फॉर्मूला होता है डेल एस इज इक्वल टू डेल एच बाय टी. सो हमें बेसिकली एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस का वैल्यू चाहिए, ये चाहिए. तो उसके लिए एच निकालना होगा. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दी एच? डेल्टा एच, यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 1406, एंड दैट इज द हीट प्रोड्यूस, मतलब हीट रिलीज हो रहा है, माइनस plus how many moles of Mg is, that is 2, and this is 3, and this is 1. Okay, so delta Ng का वैल्यू हो गया है Np minus Nr, so that should be 2 minus 4, it's minus 2 आ गया. Let's put it here, put up here. R कितना दे रखा है? 8.3. यूनिट चेक कर लेना भाई. 1406 किलो दिया है, so let's convert into the 10 to power 3. So unit will be same, joule, and temperature would be 300. So we got it, delta H would be is equal to minus 1406 10 to the power 3 minus 2 into 8.3 into 300. That's what you got it. And we got the answer minus 1411. So minimum value of T delta S is nothing but this. This is the answer. Yes? Okay, now we have a next question. That is question actually metallurgy का है, लेकिन साथ में thermodynamics का भी connection है इसमें. So let's find out what should be the answer for this question. Okay, Gibbs energy versus plot for the formation of oxide is given below. So we have to check it. तो देखो यहाँ पे ये गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है और यहाँ पे टेम्परेचर. जितना गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है उतनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है.
तो ये सारे जितने चल रहे हैं, ये देखो -400 के नीचे है, ये भी है। तो जितने बॉटम साइड चल रहे हैं, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी उतनी ही नेगेटिव चल रही है। और जब ये क्रॉस कर जा रहे हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, ये क्रॉस कर जा रहे हैं, तो उस समय उनका गिव्स फ्री एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड चल रहा है नीचे और यहाँ पे CO2 को क्रॉस कर गया। इसका मतलब है कि जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, CO2 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसका G नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ इसके बाद जिंक ऑक्साइड का G जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, पॉजिटिव या उससे ज़्यादा हो जाएगा। सो जिंक ऑक्साइड अनस्टेबल हो जाएगा कंपैरेटिवली एट दिस टेम्परेचर, इसके ऊपर, क्योंकि CO2 स्टेबल ही रहेगा। तो अब बस वही हमें मेजर कर लेना है कि कौन सा क्या मैच कर रहा है, ठीक है। चलो अप्लाई करके देखते हैं। जस्ट सेकेंड, मैं ये सारा रफ वर्क हटा दूँ पहले। ओके, अब देखो, तो एट 600 CO कैन नॉट रिड्यूस आयरन ऑक्साइड। रिड्यूस का मतलब है कि उसी के एलिमेंट को उसी से अलग कर देना। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन को रिड्यूस करेगा अगर CO2 ब्लॉक हो। तो लेट्स से कि CO2 कितना कहाँ पे जा रहा है, CO आयरन रहा, ये रहा आयरन ऑक्साइड, ये पूरी चल रही है यहाँ से, और ये रही कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली इस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, मतलब जैसे ही ये पॉइंट क्रॉस हो जाएगा ये टेम्परेचर पे, द कार्बन मोनोऑक्साइड इज अनस्टेबल एंड आयरन ऑक्साइड विल बी स्टेबल। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड शुड भी अनस्टेबल होना चाहिए ताकि वो आयरन में कन्वर्ट हो जाए। तो एट 600 CO कैन नॉट रिड्यूस आयरन ऑक्साइड, हमें करेक्ट निकालना है। 600 600, ओके, नीचे पीछे की तरफ चल रहा है, पीछे की तरफ CO जो ज़्यादा स्टेबल है वो इसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि आयरन ऊपर बैठा हुआ है तो G की वैल्यू उसके ऊपर ज़्यादा चल रही है, तो इसको रिड्यूस कर देगा। तो ये गलत हो गया। ऐसे ही बाकी चेक करेंगे। 600 पे CO कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड, 600 कहाँ रहा, ये रहा 600। तो 600 पर फिर से चेक करते हैं। जिंक ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है 1000 पे, 600 पे नहीं हो रहा है। तो एट 600 CO कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड, CO ज़्यादा अनस्टेबल है, नहीं रिड्यूस हो पाएगा, ये भी गलत हो गया। फिर आता है नेक्स्ट, 600 C कैन रिड्यूस कार्बन, कार्बन मीन्स यहाँ भाई नहीं हो पाएगा ये भी। एट 600 C कैन रिड्यूस आयरन ऑक्साइड, ओके बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि आयरन ऑक्साइड ऊपर की तरफ है तो उसका गिव्स फ्री एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो डेफिनेटली CO2 ज़्यादा स्टेबल है, ये इसको कर देगा। सो योर आंसर शुड बी डी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका गिव्स फ्री एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव है वो ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, तो वो दूसरे ऑक्साइड को उसी के कंपाउंड से रिड्यूस कर देगा। तो 600 पे हम देख रहे हैं कि कार्बन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव चल रहा है, जबकि आयरन का पॉजिटिव चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो वी हैव CO प्लस O2, हाँ, ओके, सो डेल एच ऑफ दिस रिएक्शन। तुम लोग जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मैं बताती हूँ। आ गया आंसर? चलो लो, अगर आ गया है तो मैच करो, नहीं आया तो देखो यहाँ पे डेल एच ऑफ द रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन का हमको डेल्टा एच चाहिए ना। We have these two equations. How we can arrange these two equations so we will get this one. Let's find out. So first equation, this equation B will keep it as it is. C plus O2 will give you the CO2 minus Y चल रहा है, ग्रेफाइड यहाँ आता है, यहाँ पे ग्रेफाइड हो गया, but we want CO as a product, so CO यहाँ पे reactant दे रखा है, तो रिवर्स कर देते हैं इक्वेशन को। CO2 will give you the twice of CO
plus O2. वी डोंट वांट CO2 इन द मेन इस इक्वेशन में CO2 नहीं है, तो क्या करें, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो जो एनर्जी होगी उसका साइन भी चेंज हो जाएगा और वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ना बस हो गया, इसको बैलेंस कर देते हैं। ये CO2 कैंसिल हो गए। C प्लस हाफ ऑफ O2 विल गिव यू द CO। तो हमारा आंसर आ जाएगा -y प्लस x/2। हमने एनर्जी को भी सम कर दिया। So we have an answer that is x minus 2 by 2. X minus 2 by 2. That is the answer. So let's move to the next question. We have A convert into 2B plus C for this given reaction. If the initial pressure कितना दे रखा है 450 and the pressure is 720 mm of mercury, right? So the fraction value of x निकालना है। Basically ये question इन्होंने इक्विलिब्रियम का दे दिया है, फिर भी चलो लेट्स डू इट। 2B plus C। तो इनिशियल में कितना प्रेशर दिया हुआ है, T इक्वल टू 0 पर 450 दे रखा है, ये 0 है, ये 0 है। लेटर एट T टाइम पर ये कितना हो गया, 450 माइनस P हो गया है, दिस इज 2P एंड दैट इज P। और इन सब का सम करके दे रखा है 450 माइनस P प्लस 2P प्लस P, कितना दे रखा है 720। तो 450 plus 2P would be is equal to 720. So P should be is equal to 135 है ना। तो फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन क्या होता है कि जितना अमाउंट डिकम्पोज हो गया डिवाइड बाय द ओरिजिनल। तो फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 135 हमारा प्रेशर बचा है, ओरिजिनल कितना था 450, कैंसिल आउट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 0.3। so that is 3 into 10 to power minus 1 and they have asked the question in x into 10 to power minus 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 है। दैट शुड बी आंसर। तो ये थर्मो का डायनामिक्स का तो नहीं है बट इक्विलिब्रियम को कनेक्ट कर दिया। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज they have given graph to us. So what do you think, how to solve this question? Analyze first, then I'll tell how to do. Okay, so graph of the Gibbs free energy and the extent of reaction. The number of the statement from the following are true with C is okay। ये तो पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एट इक्विलिब्रियम पे जी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और नॉन स्पॉन्टेनियस पे जी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो एट पॉइंट ए स्लोप इज गोइंग नेगेटिव। तो अगर हमारी इक्वेशन है जी इज इक्वल टू del H minus T delta S, so reaction is spontaneous at A and B. We have to find out which are true with respect to the C. So at point A the slope is getting negative. इसका मतलब है G भी कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, G नेगेटिव है। So hence reaction is spontaneous at point A. बिल्कुल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई है पॉइंट ए पर। बी पर स्लोप कैसे चल रहा है, द स्लोप इज ऑलमोस्ट पैरेलल, देयर इज नो स्ट्रेट लाइन। सो एट पॉइंट बी स्लोप इज बिकम 0, so means that is the equilibrium condition. So A is spontaneous, B is equilibrium and C कैसे चल रहा है, C पे स्लोप पॉजिटिव हो रहा है। स्लोप पॉजिटिव मीन्स G is positive, G is means C is non-spontaneous. This should be the non-spontaneous. तो देखो कौन सा आंसर ठीक होगा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ए एंड बी रॉन्ग।
Reaction is at equilibrium at point B, ठीक है. Non-spontaneous at point C. Oh, that's right. Reaction is spontaneous at A, non-spontaneous at C. Wrong. Reaction is spontaneous at A and B. This is wrong. So here we got the B answer. If the slope is negative, means G is negative, G is negative. It is a spontaneous process. So let's move to the next question. We have to find out the number of endothermic reaction. Okay. Analyze question, how to do. Endothermic reaction. So endothermic means the number of endothermic uh, in which it is the energy is getting absorbed. Okay. So decomposition reaction is an endothermic reaction. So definitely this is endo. This is also getting decomposed, so this is endo. Here the liquid is converted into the gas. This is also endo because heat is gonna be absorbed here. The formation is exo, right? So we will write that is the first one and the second one is endothermic. This is also endothermic. But this is exothermic. So we have an answer. Okay, next question we will move. Solid fuel. Solid fuel Fe2O3 and aluminium. Ratio is 1 is to 2. The heat evolved per gram of the mixture will be. Okay, let's write first equation. F2O3 plus aluminium, that is the 1 is to 2 ratio. So let's write 2. This will give you aluminium is a better reducive agent 2Fe plus Al2O3. So that should be 1 is to 2 ratio. Enthalpy of the reaction HP minus HR. So product is how much given? Alumina is given, that is the 1700. HR is given how much? That is the 840. So your answer, you got it. That is around just 1 second. You will get the 860. So 860, that energy is out per mole for 1 mole, right? So basically iron and aluminium Fe2O3 and aluminium 1 is to 2 ratio is given. So that mass is 160 and 54. So basically that is the 2.96 they are asking, the heat of evolve per kg per gram of the mixture. Okay, total mixture we are getting, that is the uh, 214 gram mixture. So we will have 860 divided by 214, that we will get it 4 kilojoule per gram. Because that we got it kilojoule per mole. So per gram is how much? That is the 4 kilojoule. And that's our answer. Okay. Now move to the next question.
The total number of intensive property from the following. Intensive property means whose value does not depend upon the amount and the size. So molar heat capacity is intensive, molarity is intensive, E cell is intensive, molar mass is intensive, volume, mole and Gibbs free energy is extensive. So we have answer 4. Next question would be 1 mole of ideal gas. Okay, read out question fast and then we will solve. So 1 mole of ideal gas 350 and 2 liter vessel thermally conducted wall. Okay, मतलब temperature constant रख रखा है, which are in contact with the surrounding, the undergo isothermal reversible expansion 2 to 3 meter against a constant pressure 4. The change in entropy. Entropy means as they are asking Q by T. Thermally insulated or reversible means that is U is equal to Q plus W. So U should be 0, then U would be 0. So Q should be is equal to W. So we know that is minus 2.303 for thermally reversible. nRT log of V2 by V1 divided by T. So minus 2.303 nR log of V2 by V1. Just put this all into the formulas. We have minus 2.303. Mole is given 1, that is the 1 mole is given. R is given how much? 8.314. And log value and V2 is 3 by 2. So on calculation you will get answer approximately 3 joules per Kelvin. That is it. 2 AB is forming. So we will write first for per mole के लिए. That should be equal to AB. Delta H is given 200. So bond energy is given, that is A2, B2 and AB is given 1 is to 0.5 is to 1. So if we are taking X, that should be X by 2. This is also X. So here the delta H would be is equal to HR minus HP when we talk about the bond energy. So R should be is equal to 1 by 2 X because energy value is given X plus 1 by 2 and that is X by 2 minus that should be X only. So we will get it, that is the X by 2 plus X by 4 minus X. So we will get it X by 4 minus X by 2. So answer आ जाएगा हमारा, that is the 2x minus 4x 4 into 2 means minus 2x by 4 into 2. So basically X by 4 we will get it with minus sign and the value is given 200, that is per mole. So we will use it this. Minus minus cancel, X should be is equal to 800 kilojoules per mole. That's the answer. So we'll move to the next question. So 30.4 kilojoule heat is required to melt 1 mole of NaCl. Okay, solid will convert into the NaCl liquid. 30.4 kilojoule. And the entropy change of the melting point is 28. So S is equal to delta H by T. So that is given 28.4 and this is given 30.4, 10 to power 3. So melting point we have to calculate. So T you will get it 1070.4 Kelvin. And that's your answer.